Hello student, welcome to standard 7th. Today we will be learning English subject unit 1 lesson number 1 past, present, future. This is a very beautiful poem. The poet of this poem is Emily Bront. This poem is written in conversation type. Means the poet is asking some question to the child. In this poem, some rhyming words, adjective, old English words are also used. So you all must be having textbook. If you don't have, download the textbook from Google. Now follow each and every word of this poem. Tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening soft and mild, with a wind that sees mournfully. Tell me what is the present hour, a green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. And what is the future, happy one? A sea beneath a cloudless sun, a mighty, glorious, dazzling sea, stretching into infinity. So, this is a very beautiful poem. So, in this poem, Old English words are used. See, in the very second line, what the past is like to thee, THEE, means YOU. YOU. The poet is asking, now the first stanza I read, tell me, smiling child, what the past is like to thee, an autumn evening soft and mild, with a wind that sees mournfully. Now in this first stanza, the poet is asking the smiling child, what the past is like to you. इस पोएम के जो पोएट है एमिली ब्रॉन्टी, वो स्मॉल स्माइलिंग चाइल्ड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हारे लिए पास्ट कैसा है. पास्ट यानी जो बीत गया है, जो समय बीत गया है उसे हम पास्ट कहते हैं. तो पोएट वो स्माइलिंग चाइल्ड को पूछता है, बीते हुए पल आपके कैसे है. देखो हमारे भी कुछ बीते हुए पल रहते हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे पल है, सुख दुख भी है, लेकिन कई बार कुछ अच्छे पल भी होते हैं जो हमें हमेशा याद आते हैं. ऐसा लगता है कि काश वो बीते दिन वापस आ जाए. There are some memorable moments in your life which you always want they should remain as it is. For example, you must be always thinking that when I was in KG, how I was happy. Now you have gone to 7th standard, studies are increased. So, lot of problems are there, lot of difficulties are there, like that. I give my example. I still think that my old school days should come back. I should become small and I always remember how I used to play, how I used to do mischievous, and by remembering my old days, I become sad. अभी पास्ट तो वापस प्रेजेंट होके आने वाला नहीं है. तो वही है, पोएट हैज आस्क्ड दैट स्माइलिंग चाइल्ड, फॉर यू, व्हाट इज द पास्ट, हाउ वाज योर पास्ट.
सो हियर स्माइलिंग चाइल्ड पोएट को आंसर देता है. क्या बोलता है वो? ही इज गिविंग आंसर टू द पोएट. माई पास्ट इज लाइक एन ऑटम विंड, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड, with a wind that sighs mournfully. Autumn. Autumn is the name of a season. In Hindi, we say शरद ऋतु और पतझड़ का मौसम. In autumn season, what happens? The leaves of the trees fall down. यानी पतझड़ के मौसम में जो झाड़ पेड़ के जो पत्तियां है वो अपने आप नीचे गिर जाती है. तो स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट इज क्या बोल रहा है कि मेरे लिए ये जो पास्ट है ये कैसा है? एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड. सॉफ्ट एंड माइल्ड मीन्स मीठी मीठी, भीनी भीनी. माइल्ड मीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं. An autumn evening soft and mild, with a wind that sighs mournfully. पहले भी मैंने कहा है कि कुछ हसीन पल हमारे जीवन में होते हैं जो वापस आ जाए. इसी तरह पोएट के लिए भी ये सन ऐसा ही है, ये समय ऐसा ही है. वो चाहता है कि बीते हुए पल मेरे भी वापस आ जाए. सो ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग whatever time he have passed, that past days should come back in his life. Now the second stanza. Tell me, what is the present hour? A green and flowery spray, where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. Now in this second stanza, tell me what is the present hour. Now here the poet is asking the child, how is the present? He is asking that smiling child, how is the present for you? यहाँ पे पोएट जो पोएट है वो बच्चे से पूछ रहा है कि तुम्हारा आज कैसा है. अभी हम सभी का आज कैसा है? आज सब हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, हर रोज़ नया कुछ सीख रहे हैं. सीखते सीखते आप बड़े हो जाते हो. हाँ, फिर अपने जीवन में अच्छा प्रोग्रेस करते हो. ये सारी चीज़ें प्रेजेंट में हम लोग कर रहे हैं. नाउ यू ऑल आर स्टेइंग एट होम. यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग. You go to bath, then you have your breakfast. After that you sit for 2 lectures which are given by the school for online lectures. ये आपका प्रेजेंट है. जो समय हम लोग अभी अपने जीवन में व्यतीत कर रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंट. सी इन इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो आई टॉट यू मेनी टाइम, इन 4th ऑल्सो एंड 5th ऑल्सो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो वही है जो प्रेजेंट है. तो पोएट ने बच्चे को पूछा कि तुम्हारा प्रेजेंट कैसा है. द पोएट आस्क्ड द चाइल्ड, टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आवर. नाउ दैट स्माइलिंग चाइल्ड, ही इज टेलिंग फॉर मी द प्रेजेंट आवर इज लाइक अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे. सी, ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे, वेयर वी गेट टू सी? We see bushes in garden. See, when you go to garden, small grass you can see, green grass. उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे. ये ऐसा ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स. यहाँ पे यंग बर्ड किसको सिंबलाइज किया है पोएट ने? चाइल्ड को. जो स्माइलिंग चाइल्ड है उसको यंग बर्ड यहाँ पे बोला है. आप भी यंग हो, सीख रहे हो, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हो. सो फ्रॉम दिस इन आवर प्रेजेंट आवर व्हाट आर वी डूइंग? वी ऑल्सो आर टेकिंग एजुकेशन, इंक्रीजिंग आवर स्ट्रेंथ, पावर, विल पावर एंड
we are doing progress in our life. This is our present hour. Where a young bird sits gathering its power. किसी भी फ्लावरी ब्रांच पर यंग बर्ड बैठता है, अपना सारा का सारा पावर इकट्ठा करता है, सीखता है, सब कुछ इकट्ठा करता है, टू माउंट एंड फ्लाई अवे, ताकि एक दिन वो सब कुछ सीखकर महान बनकर कुछ कर सके, कुछ पा सके. सो दिस इज द प्रेजेंट आवर. कि जैसा कोई, आपने हनी देखी है, जो हनी बी रहते हैं वो फ्लावर पे बैठते हैं और फिर वो अपना वो तैयार करते हैं और उसमें से क्या निकलता है, हनी निकलता है. उसी तरह कि ये जो यंग बर्ड है, दे सिट ऑन फ्लावरी स्प्रे, ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे, एंड व्हाट दे डू, दे गेन नॉलेज and they do progress in our life. They gather strength. Now is the third stanza here. And what is the future? Happy one. A sea beneath a cloudless sun. A mighty, glorious, dazzling sea stretching into infinity. Now here in the last stanza. And what is the future? Happy one. Happy one. किसको कहा है पोएट ने? स्माइलिंग चाइल्ड को. स्माइलिंग चाइल्ड को कहा है. द स्काई, द सी. द पोएट इज आस्किंग द चाइल्ड व्हाट इज द फ्यूचर. अभी फ्यूचर कोई बता सकता है क्या अपना? कोई नहीं बता सकता है. सो हियर फ्यूचर तो इन्फिनिटी यानी there is no end, unlimited, there is no end. The poet is asking the child what is the future. A sea beneath a cloudless sun, a mighty, glorious, dazzling sea stretching into infinity. Now poet has asked how is the future. किसने देखा है क्या अभी फ्यूचर? हमें भी मालूम है क्या? What will happen tomorrow? Nobody knows. तो फ्यूचर तो इन्फिनिट है. इन्फिनिट्स में जिसकी कोई सीमा नहीं है. ये सब आपका आज पे डिपेंड करता है. Whatever good deeds we do in our present hour, depending on that present hour, we can think of our future. आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आज आप कितनी लगन से सीख रहे हो, यही सीखा हुआ कल आपके लिए काम आने वाला है. रिमेंबर, सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है. तो फ्यूचर में हैप्पी रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अच्छे कर्म करने चाहिए. गुड डीड यानी अच्छे कर्म. तो यही बोला है पोएट ने जब पूछा स्माइलिंग चाइल्ड से हाउ इज़ योर फ्यूचर. सो स्माइलिंग चाइल्ड क्या जवाब देता है? फॉर मी फ्यूचर इज लाइक अ सी. सी किसको बोलते हैं? समुंदर को बोलते हैं. समुंदर को हम सी बोलते हैं. सो अ सी बीनीथ ए क्लाउडलेस सन. बीनीथ मीन्स व्हाट? Beneath is means under. एक क्लाउडलेस सन मीन्स स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं है, प्लेन एकदम स्काई है, उसको बोलते हैं क्लाउडलेस सन. सिर्फ सन दिखाई देगा स्काई में, क्लाउड्स बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे स्काई में, प्लेन स्काई. सी कैसा है, कैसा दिख रहा है? तो वो माइटी है. नाउ स्माइलिंग चाइल्ड इज टेलिंग for me the sea is like a mighty. Mighty means strong and powerful. It is, sea is glorious also. Glorious means prosper, bada, and dazzling. Dazzling means sea is dazzling means चमकता हुआ.
स्ट्रेचिंग इंटू इन्फिनिटी. स्ट्रेचिंग यानी फैलना. स्ट्रेचिंग. हाउ द रबर बैंड, इफ वी ट्राई टू स्ट्रेच इट, इलास्टिक, these things get stretched like that. फैलना. Infinity, there is no end. So the smiling child is telling, for me the sea is mighty, glorious and dazzling, stretching into infinity. I cannot say where it will end. So this is a very beautiful poem. I have given you the explanation. Now I'll give you some meanings. You have to write, and some question answer also I will give in this video, that you have to write in your notebook, and the very next day you have to send on my mobile number. I will check your homework. So THEED, its meaning is YOU. Then is mournfully, MOURNFULLY. This is the word. Its meaning is having a sorrowful feeling. Having a sorrowful feeling. SORROWFUL, sorrowful feeling. FEELING, feeling. Then is spray. Its meaning is spray. SPRAY, spray. Meaning is flowery branch. Flowery branch. F spelling FLOWERY. Flowery branch. 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 Mild. 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 Its meaning is not severe or very cold. Severe spelling SEVERE. Severe. Cold. 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 Put comma. Moderately warm. MODERATELY. Moderately warm. 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 So there are two meanings for mild. Next word is mournfully. 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 Its meaning is sadly. 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 Next word is spray. 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 Its meaning is a stem. STEM. Stem, or a stem of small branch. Small branch. SMALL. Small. BRANCH. Branch of a tree. Of a tree or plant. Of a tree. 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 Plant spelling PLANT. Plant. Put comma. Bearing. BEARING. Bearing flowers. 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 Next word for meaning, to mount. To mount. Get up. Its meaning is to get up. Now next word is mighty. 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 Its meaning is
possessing, Possessing, great power, Great, great power, Power, or strength, 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 put comma, another meaning is there, word is there, very powerful, Powerful, powerful. So there are two meanings for mighty. Next word is dazzling, Dazzling, dazzling. Its meaning is extremely bright, Extremely, Extremely, extremely bright, Brigt, bright. Infinity, next word infinity, Infiti, no sorry, Infinity, infinity. Its meaning is having no end or limit, having no end or limit, Limit, limit. Now write the adjective that are used to describe the following. Evening. Its answer is soft and mild, Mild, mild. Spray, Spray, spray. Its answer is green and flowery. Third one is sea. Its answer is mighty, glorious, dazzling. All these words are in the poem only. Now next question. Write one line about each of the following with the help of the poem. First one, wind in the autumn evening. Its answer is wind sighs mournfully in the soft mild autumn evening. Second one, young bird on the spray. A young bird sits on the spray, gathering its power to mount and fly. Third one is the sea. The sea is mighty, glorious, and dazzling, and stretching into infinity. Stretching into infinity. All these spellings are in your poem only. Now next question is, there are 3 metaphors in the poem. Can you find them? First one is, what is the past like to thee? See in your poem, the very second line. What is the past like to thee? Then the second one, tell me what is the present hour? In the second stanza, it comes in your poem. Tell me what is the present hour? Green and
flowery. First one is in first stanza, what is the past like to thee? Put dot dot to autumn evening. Now third one, in your third stanza you will find very first line. And what is the future? Happy one. Put dot dot, see beneath a cloudless sun. So in the first stanza, first two lines you have to write. Then from the second stanza you have to write two lines, first two lines, and from the third stanza you have to write first two lines. So this is the exercise from your workbook. This you have to write in your notebook and send it on my mobile number. Nobody will try to escape my mobile number. All of you know. Then too I am repeating here. My mobile number is 9324313894. And as soon as you listen this lecture, you attend this lecture, you have to write this homework in your notebook and send it to me. Very next day you have to send it. No more delay. If you say you will send me after 4 to 5 days, I won't accept. I will not check your homework. So, we have completed first poem, past, present and future. So, very beautiful poem. This was. So, here I give an end to my lecture. Have a good day. Thank you so much.